अच्छा, size of atoms slash ions. अच्छा, size of atoms पे कि you've the first thing is we're going to talk about sizes of isoelectronic atoms, ठीक है? Sir, which is this the next chapter? No, it's the same one, लेकिन it's just a few small things related to atomic structures. अच्छा, size of isoelectronic atoms. उसपे कि you've got what is isoelectronic? Isoelectronic means कि atoms that have exactly uh, the same number of electrons. So one example is I have Na+1. I have oxygen, which is 2 minus, and I have neon. Okay. Now these three atoms are isoelectronic. They have, I mean, they're not atoms. Some of them are ions, okay, but they have the same number of electrons. Okay. These are the proton numbers, 8, and this is 10. Sodium was supposed to have 11 electrons, but right now it's got 10 electrons. Okay, क्योंकि वो ion है. Oxygen supposed to have 8 electrons, but at the moment it's got 10 electrons. And neon already has 10 electrons. Okay, so they all have exactly the same electronic configuration, even though they are different elements, but they have exactly हर चीज exactly एक जैसी है. So which one is going to be the biggest atom? Which one is going to be the smallest atom? So in this particular case, अगर इसको मैं order में रखूँ ना, तो I'm going to put oxygen on this side. ठीक है, Na is going to be the smallest one. Oxygen जो है, that's going to be the relatively speaking, that's going to be the biggest one. ठीक है, and there's a reason for that. They all have the same exact electronic configuration, except K. When you move to the left, the nucleus has more protons. Okay, so your nucleus has more protons. And if it has more protons, that means there's going to be more attraction for electrons. So that would mean okay, sodium is going to be the smallest one because the 10 electrons will be very strongly attracted to sodium. Okay? So more attraction for electrons. So hence the one on the left side is going to be smaller. ठीक है, ये clear है? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके 11 protons हैं, इसके 10 protons हैं, and this one has 8 protons. ठीक है. So remember, you might get a question on isoelectronic atoms, so this is what you're going to write. ठीक है, for isoelectronic atoms. If they have the same number of electrons, so just check the protons. The one that has the greatest protons, that's the one that's going to be the smallest. अच्छा, फिर अगले के down the group is pretty easy. Size of atoms down the group. अच्छा, वो obvious है कि down the group you get more shells. So when you move down the group, the size will obviously increase. ठीक है, so the size of atom increases. Why? Because you've got more shells. ठीक है, लिथियम जो होगा वो 2 1 होगा. उसी ग्रुप में you're going to have sodium, which is going to be 281, so there's extra shell. ठीक है, so that's bigger in size. Potassium होगा, so that's going to be 2
881, ठीक है, so that's going to be even bigger in size, ठीक है. So down the group you get bigger and bigger atoms, ठीक है. अच्छा, अब अगला ये कि अगला जो पार्ट है वो ये कि across the period. अच्छा, वो हमने ना पहले भी डिस्कस किया था अक्रॉस द पीरियड के व्हाट हैपेंस अक्रॉस द पीरियड. वो हमने भी डिस्कस्ड इट इन आयनाइजेशन एनर्जीज. तो सर 2 मिनट ऊपर कर सकते हैं क्या? you know अच्छा, मोती ने अक्रॉस द पीरियड एटम्स ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, लेट्स से पीरियड 2 है. दिस इज लिथियम. और इस तरह के अच्छा, इस तरह के 8 और ड्रॉ कर लेते हैं. अच्छा, ये अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, you've got 8 atoms है. और सारे को ड्रॉ कर लेते हैं. लिथियम has 3 protons in its nucleus. It's got 3 electrons. Beryllium has 4 protons and it's got 4 electrons, ठीक है. Then उसके बाद boron आता है, that's 5 protons in the nucleus and it's got 5 electrons, ठीक है. 1s2 2s2 2p1 5. एक सेकंड, एक ज्यादा हो गया. फिर क्या आता है, कुछ चौथा कौन सा है? कार्बन. कार्बन is 6 protons, then it's got 6 electrons. तो 1s2 2s2 2p 4. अच्छा, फिर नाइट्रोजन, that's 7 protons and 7 electrons 2 5. 1s2 2s2 2p 3. एक ज्यादा हो गया. Oxygen, that's 8 protons and 2 6, ठीक है. और फिर 9 protons फ्लोरीन. अच्छा, एनीवेज ये हमने पहले भी किया था. एंड आई टोल्ड यू कि क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द एटम्स. Decreases Decrease. across the period. हाँ, ठीक है, बिकॉज शेल्स वही रहते हैं, यू गेट द सेम नंबर ऑफ शेल्स बट दे बिकम स्मॉलर व्हेन यू मूव टू द राइट, ठीक है. तो दे गोना बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर बिकॉज द अट्रैक्शन विल इंक्रीज, ठीक है. तो तो जनरली व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन यू मूव टू द राइट बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन, और ग्रेजुअल होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन, सेम शील्डिंग, ठीक है. सो सेम नंबर ऑफ शेल्स, अच्छा, सेम शील्डिंग एंड but you have increasing proton number. That's an increasing nuclear charge. And because of the increasing nuclear charge, they become smaller. There's going to be more attraction for valence electrons. And since it's going to be more attraction for valence electrons, they have smaller atomic radius. ठीक है, ये across the period है. Is this clear? Yes, sir. और ये जो है ना डेटा बुकलेट में ना, it's given in the data booklet के the atomic radius is, I mean, you should know the trend, लेकिन the values, ठीक है, they're going to be given in the, ये यहाँ पे given है, ठीक है, across the period. ये period 3 देख लो, that's sodium is the biggest one, 0.186, then you've got 0.16, it becomes smaller and smaller, ठीक है, ये सारे. तो silicon even smaller across the period, phosphorus, they become smaller and smaller.
आर्गन का सिर्फ मसला है, ठीक है, and I'm going to discuss that, ठीक है, कि why is argon almost double है, और argon is like they've given argon as the biggest one, ठीक है। अच्छा, अब उसका इशू ये कि this is the general trend, ठीक है, but there's a problem with how atomic radiuses are measured. So how are atomic radiuses measured? So the problem in that is कि the atom itself has, I mean, उसकी जो boundary है ना, that's not very well defined, ठीक है, there might be electrons in the p orbital, there might be electrons roaming around in an s orbital, ठीक है, spherical orbital around the nucleus, there might be electrons in the d subshell, ठीक है, so there'll be electrons that'll be buzzing around, so the point is, ठीक है, there might be a even bigger s subshell, ठीक है, तो कोई s subshell हो सकता है which would be very energetic, and the electrons are like really far away, ठीक है, from the nucleus. So the point is, the atom's outer electron boundary is like it's not very well defined, ठीक है, तो so the way they measure the atomic radius is कि जैसा सोडियम है ना, सोडियम, remember, is what? It's metallic, right? तो metallic का मतलब है there's going to be lots of sodium atoms, ठीक है, let's say एक सोडियम atom है in a sea of electrons, right? तो ठीक है, there's another one, हाँ जी, सर अगर आखिर में टाइम हुआ कोई तो फिर हम क्या सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी एक बार रिवाइज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए प्लीज। ठीक है, एक सेकंड रुकना। अच्छा, सोडियम, so sodium has like positive metal ions in a sea of electrons. It's metallic, right? So remember, the atom's boundary or the ion's boundary is not very well defined, and it's going to be a sea of electrons. ठीक है, lots of, when the sodium loses one electron, so not a lot of sea of electrons. अच्छा, so how is the atomic radius measured? The atomic radius is measured because the nucleus is very well defined. So what they do is they measure the distance between the nucleus. ठीक है, that distance is measured, and that is divided by 2. That is how the radius is measured. ठीक है, so distance between nuclei, you take that distance and you divide that by 2. तो इसके लिए you're going to divide that by 2. ठीक है, that's going to be that is basically your atomic radius, ठीक है। तो ये clear है कि in metals this is how they measure the distance or the size of an atom, ठीक है, is this clear? ये clear है? Yes or no, खदीजा, clear है? बाकियों को clear है? Yes, sir. Yes. Okay. जी सर। अच्छा, so then you've got covalent molecules like the first three, like sodium, magnesium, aluminium. These are obviously all metallic, right? So, अच्छा, you also have molecules like chlorine is a molecule, right? So, उसके अंदर भी you're going to do exactly the same thing. So, for example, if you have a Cl2 molecule,
you're going to try and measure. Of Cl, तो it doesn't form metallic bonds, right? So Cl will form covalent molecules. तो उसके अंदर क्या होगा? There's going to be two Cl nucleuses. There's going to be a bunch of shared electrons, right, between them. And obviously there's going to be lots of 17 other electrons buzzing around, ठीक है? Around these two nucleuses in different orbitals. So the nucleus is very well defined. So again, what they're going to do is they're going to measure the distance between the two nuclei and do exactly the same. Okay, so this is for covalent molecules. To kind of do the same exact thing. अच्छा, noble gases पे जब आते हैं ना, like argon, that's where the problem comes. ठीक है, noble gases like argon or neon, they simply don't bond with other elements. ठीक है, they don't form bonds. तो अगर इसी मेथड से ना you try to figure out the radius of an argon atom, right? तो nucleus है, इसकी outer boundary, obviously that's not really well defined, ठीक है? You can spot the nucleus very easily. अच्छा, problem है कि the two atoms are not bonding to each other. You take one atom and you exactly do the same thing, okay? But when you do that, then obviously because they're not bonding to each other, ठीक है? So when you try to do exactly the same, so you're going to get something that would be kind of incorrect. ठीक है? तो इस particular case में, ठीक है, in this particular case, एक से मैं ऐड करूं. So incorrectly measured. क्योंकि जो मेथड है that वो खुद ही incorrect है, especially for this one. ठीक है, so it works for the other ones, but for covalent molecules it works, for ये metallic compounds it works, but it doesn't really work for noble gases. ठीक है, तो ये क्लियर है. तो डेटा बुकलेट के अंदर ना जो वैल्यू गिवन है ना for argon, that's like very big. ठीक है, जो ऑफिशियल वैल्यू है that's like very big. उससे वो लिखा हुआ भी है कि किस तरीके से मेजर किया था. वैंडरवाल्स होती हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है. So they were not forming any bonds, so which is why this is much bigger. तो ये क्लियर है. तो इसका ग्राफ जो बनेगा ना, if I make a graph of this, तो Sir, जो does that mean कि argon की value तो incorrect सी है? हाँ वो इनकरेक्ट चाहिए, मतलब उसको इतना सीरियसली नहीं आप ले सकते. ठीक है, बाकियों की जो है दैट मेक्स सेंस, बट आर्गन काइंड ऑफ नॉट मेजर्ड प्रॉपर्ली. ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा दैट्स गोना बी लेट्स लिथियम, बेरिलियम, अच्छा बोरॉन, you've got carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and then neon. ठीक है, तो अब इसमें the trend will be that the atomic radius trend will be कि जब वो यहाँ से शुरू होगा ना लिथियम से, it should decrease, right? up till argon. ठीक है, it should decrease. That's the first one. ठीक है, this is the second one. Then you've got the third, fourth. अच्छा, लेकिन नियॉन की ना गलत मेजर भी होगी. ठीक है, it's going to be somewhere up here. ठीक है, is this clear कि why neon has a problem? ये clear है? Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा ये आपके एटॉमिक रेडियस हो गए, ठीक है। अच्छा फिर आयनिक रेडियस का ये कि फॉर मेटल्स, ठीक है, द आउटर शेल इज लॉस्ट, so the ionic radius is going to be a lot smaller, ठीक है। they're going to lose the outer shell electrons, ठीक है। इसका वो लिख लो कि for metals the outer shell electrons are lost. So if you compare an atom with its cation, ठीक है, the cation is going to be a lot smaller and the atom is going to be a lot bigger. ये भी clear है? और vice versa नॉन मेटल्स में क्या होता है? नॉन मेटल्स में they gain electrons. तो in the case of non metals the radiuses are a lot bigger for the anion, ठीक है। अगर डाइट्रोजन एनाइन बनाता है या फिर ये ऑक्सीजन बनाता है या फ्लोरीन बनाता है, तो अच्छा इस पे होता है कि द गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। ये भी आयोनिक रेडियस, ठीक है। अच्छा द गेन इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, which is why they're going to have more electrons, so there's going to be a lot of electron repulsion, extra electrons आ जाएंगे ना। So when they gain electrons there's going to be a lot of electron repulsion, which is why the electrons will try to be as far away from each other. A negative charge भी आ गया ना, so the anion is going to be bigger than the atom. यानी N3 minus जो होगा ना, that will be bigger in size compared to just N. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. और इधर वाइस वर्सा, अगर पॉजिटिव आयन होगा तो Mg2 plus is going to be a lot smaller compared to the Mg atom, ठीक है। तो remember this कि cations, positive ions, they lose their outer electrons and therefore they are smaller in size, ठीक है। पूरा एक शेल कम हो जाता है ना, so they're significantly smaller in size. And anions, they gain electrons. तो वो extra electrons आ जाते हैं, which cause a lot of repulsion, so the size of the atom kind of becomes bigger in size. The electrons will try to be as far away from each other as possible. So N3 minus 1 is going to be bigger in size compared to the N atom, ठीक है। तो ये यहाँ पे given भी है कि if you look over here, अच्छा silicon is given as a positive ion, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। Let me just, खैर वो सिलिकॉन पीरियड 3 के लिए था, कार्बन डजंट फॉर्म आयंस, ठीक है, तो वी कैन इग्नोर दैट फॉर नाउ। इसमें पीरियड 2 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। अच्छा कार्बन को उससे दोनों आयंस दिए हुए हैं, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन। नॉर्मली कार्बन डजंट फॉर्म एन आयन, मतलब कार्बन डजंट फॉर्म आयंस इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, टू बिगिन विद। तो ये अगर उसने दिया हुआ है तो कोई जबरदस्ती किसी कंपाउंड में ना आयन बना दिया, लेकिन अदरवाइज इट डजंट फॉर्म आयंस। सो एनीवेज लिथियम यू कैन सी कि सिग्निफिकेंटली स्मॉलर, आधा हो गया साइज। लिथियम का शेल क्या था? इट वाज 2.8, राइट? नहीं सॉरी 2.1। lithium had 3 electrons. So lithium plus 1 ion क्या होगा? That's going to be just 2. So that means it has lost one shell. 2 में से, so it's almost, it's even less than half, ठीक है। ये उससे भी, ये तो 4 times कम हो गया। This was 2 and 2 and this is now just 2, ठीक है। तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन्स are larger in size, right? So that is why the net effective charge, the electrons are more strongly attracted, ठीक है। और similarly बाकियों का भी यही है। And look at the anions, they're bigger in size. Fluorine जो है ना, fluorine minus 1 is like almost double the size. Oxygen है, oxygen 2 minus, that's almost double the size. इसने ज्यादा electrons gain किया, so that's even more than double the size, ठीक है। 0.074 था, now it's 0.171, ठीक है। So that's even more than double the size, ठीक है। चलो ये clear है? Yes. Yes, sir. But where are we gonna use these values?
क्वेश्चंस में ये वैल्यूज थी। अच्छा वैल्यूज शायद यूज हो जाए। खैर अब अभी ये पता है ना कि the data booklet will not be given to you, this 20-page data booklet. If the question requires any values, so these values will be printed next to it. ठीक है, अगर चाहिए भी। uh, I've never actually seen these values being used in AS at least. ठीक है, तो ट्रेंड्स पता होने So for चाहिए। exam, they don't give the data booklet in exam. हाँ मैंने 2022 तक ना they used to give this entire data booklet, this 20-page data booklet. अब वो बस पैसे बचा रहे हैं। अब वो है कि they're not going to give you the 20-page data booklet if you require something from the data booklet. For example, ये पेज चाहिए, तो they'll print it next to the question. Is that clear? Oh, yes. तो मतलब वो data booklet will be with you, but not as a separate booklet. ठीक है। अच्छा इसके बस थोड़े से वो क्वेश्चंस कर लेते हैं कि सिंपल सी क्वेश्चंस होंगे इसके कि सर 2 मिनट वो जैम बोर्ड पे वापस जा सकते you know ठीक है। हैं? अच्छा हमने आयनाइजेशन एनर्जी के तो क्वेश्चंस किए थे ढेर सारे। इसमें स्टार्ट में ना कहाँ पे सेम वर्कशीट। ठीक है, साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। तो बस इसके बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, वो रिमेंबर वो वैल्यूज का कोई वैल्यूज विल बी गिवन टू यू, बट आई हैव नेवर सीन देम गेटिंग। शायद किसी एक क्वेश्चन में मे बी इन 10 years दोज वर यूज्ड, बट अदरवाइज आई हैवंट सीन देम। अच्छा इसमें विच वन इज द करेक्ट वन, ये भी हमने किया। Mg ions, will it be bigger or smaller compared to Mg? Smaller. ठीक है, तो स्मॉलर होगा, तो फर्स्ट टू होंगे ना। और सल्फर 2 minus would be bigger, right? So it's going to be B. Is that clear? Okay, negative ion is going to be bigger than the atom and positive ion is going to be smaller than the atom. ठीक है। अच्छा, which statement describes a trend in period 3 between every pair of adjacent elements from left to right? Atomic radius decreases. Is that correct? Yes, sir. ठीक है। अगला वाला वैसे आयनाइजेशन जी हमने किया था, डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड? Increases. हाँ वो 1 2 फिर 3 पे डिप होती है, फिर 4 5 डिप, फिर 7 8। ठीक है। अच्छा ये वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गया। द स्पीशीज F-1 Ne and Na+1 are isoelectronic. This means they have the same number of electrons. तो वो मैं प्रोटॉन नंबर्स बता देता हूँ कि F is 9, neon is 10 and Na+1 is 11. So which one is the smallest? They have the same number of electrons. So Sodium. ठीक है, तो सोडियम। अच्छा सोडियम इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, Yes. और बिगेस्ट कौन सा होगा? फ्लोरीन -1, राइट? तो सी, सी होगा ना। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें होगी और सबसे कम अट्रैक्शन उसमें होगी। ठीक है, तो वो बिगेस्ट होगा। क्लियर है? ये फिर से आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक की गया। इन विच ऑप्शन डू ऑल थ्री पार्टिकल्स हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? अच्छा ये वो कह रहा है सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स। पहले वाले में डू दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉन्स? मतलब No, sir. सेम नहीं है। No. इसके पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 और -2 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, 9 और -1 है तो दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है इसके पास। क्लियर है? Yes, electron semi. Okay. हाँ बस वो न्यूट्रॉन्स मेरे ख्याल से सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8 है पहले में। सेकंड में कितने हैं? उसमें भी 8 है।
थर्ड वाले में 10 है, तो वो गलत हो गया ना। तो बस बैठ के देख लो इसमें कि क्या होगा कि ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही है। ऑल ऑफ देम हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स ये वाला सही है, न्यूट्रॉन सारों के पास 10 है। क्लियर है, देर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे ऑल हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बाकी रह गया, ये क्लियर है ये क्वेश्चन। ये वाला बताओ, इन विच ऑर्डर डू द रेडियस इंक्रीज? आर्गन आर्गन 18 होता है, पोटेशियम इज 19 एंड कैल्शियम इज 20। वो +1 है, दिस इज 2 प्लस। So they have the same number of electrons, 18 electrons. So which one is the smallest? Calcium. The smallest जो है ना, that's calcium, and the biggest is going to be argon, right? ठीक है। अच्छा, और इसी तरह फिर in which group of particles is in order of increasing size? Increasing size, मेरे ख्याल से ये वाला है, क्योंकि तीनों के पास है, they all have 10 electrons। नहीं, increasing size, ये decreasing size है। सबसे I ज्यादा think it's D, sir. इसका उल्टा होगा ना, या ये? G. Yes. एक सेकेंड, 11, 10, 9, और And सारों के 9. पास, सारों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो Yes. ये सबसे छोटा होगा, एंड दिस वुड बी द बिगेस्ट वन। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी डी। एटॉमिक रेडियस बताओ कि किसका छोटा होता है, सोडियम का या सल्फर का? सल्फर ठीक है, और वो सोडियम। अक्रॉस द पीरियड है ना, तो सल्फर इज गोइंग टू बी द स्मॉलर वन। तो ये हमने क्या था, सल्फर इज गोइंग टू बी द स्मॉलर वन, अक्रॉस द पीरियड कम होता है ना। और आयनिक रेडियस में क्या होगा, कि आयनिक में होगा कि सोडियम जो होगा, सोडियम का जो आयन होगा, दैट्स गोइंग टू बी अ लॉट स्मॉलर इन साइज, और सल्फर का जो आयन होगा, दैट्स गोइंग टू बी अ लॉट बिगर इन साइज। तो सल्फर इज तो बी होगा, सल्फर इज गोइंग टू बी, उसका जो आयन है ना, दैट विल बी, सल्फर विल बी अ लॉट बिगर इन साइज एंड सोडियम विल बी अ लॉट स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, तो sir. ऐसे ही खैर उसी तरह रिपीट होने की, ये वाला कर लेते हैं, व्हिच स्पीशीज हैज द लार्जेस्ट रेडियस? पहले तो उसके पास सबसे ज्यादा शेल्स होने चाहिए। आई थिंक सारों के पास 18 ए इलेक्ट्रॉन, सारों के पास 18 है ना। इसके पास भी 18 है, हाँ, ऑल ऑफ देम हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे कम प्रोटॉन्स आई थिंक फर्स्ट वाले के पास है 15, सीएल 17, 18 और वो 19, तो ए ही है, ए इज लीस्ट अट्रैक्शन फॉर इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, ये खैर ये एक बस क्वेश्चन कर लेते हैं कि, अच्छा वो कह रहा है कि सीजियम क्लोराइड हैज अ डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर फ्रॉम बोथ सोडियम क्लोराइड एंड, इसको छोड़ दो, हम केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे, उसको स्किप कर लो, वो आयनिक लैटिस की बात हो रही है, तो वी कैन इग्नोर दैट। अच्छा, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन, why is the ionic radius of chloride ion larger than the radius of sodium ion? क्लोरीन जो होता है 17, Na जो होता है 11। तो क्या रीजन है, why is chlorine bigger in size? इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो एक पूरा शेल ज्यादा है ना, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही नहीं वो, देयर इज अ होल एडिशनल शेल, सर ए तो पूरा एक देयर इज एन एक्स्ट्रा शेल। ठीक है, तो ए होगा। अच्छा, which diagram shows the variation of metallic radius r of the group 1 elements? तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक सॉरी रेडियस को ज्यादा होता रहता है ना।
ठीक है. When you move down the group, you get more shells. Or remember, so it's going to be the radius will increase when you move down a group 1 में. ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा शेल्स आई जा रहे हैं. चलो ठीक है, ये क्लियर है. मैंने इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना. सिंपल, ये इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है. बीच बीच में ना कुछ क्वेश्चंस ये उसी तरह के क्वेश्चंस हैं. यू कैन गो थ्रू दिस. ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं है. सो वी काइंड ऑफ प्रीटी मच डन विद एटॉमिक रेडियस. ठीक है, और अब वो पूछ लो, वो किससे पूछा था कि क्या करना था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज. यस सर. तो उसका बस ये है कि एक ही एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं. किधर है यार ये एटॉमिक स्ट्रक्चर? ये अच्छा, सक्सेसिव वाज के you take an atom and you keep on removing electrons from that atom, right? तो जैसा ये वाला, ये कौन सा है? सल्फर, आई थिंक. सो फर्स्ट 4 electrons are on the outside ना. नहीं सही, फर्स्ट 6 electrons are on the outside. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सारे रिमूव करना आसान है. ठीक है, इजी होगा ना. और फिर सेवंथ जब रिमूव करोगे ना, सेवंथ, फिर सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14 तक ना, ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर डिफिकल्ट टू रिमूव. आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि you're in the inner shell ना. शीलिंग कम हो गई है, डिस्टेंस कम हो गया है, सो द इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, सो देयर इज मोर अट्रैक्शन. और फिर एंड वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो लास्ट आयनाइजेशन एनर्जी व्हिच इज 15th एंड 16th, दैट वुड बी इवन मोर डिफिकल्ट. ये क्लियर है? यस सर. तो उसके फैक्टर्स होते थे, ये सारे फैक्टर्स होते थे कि आउटर शेल क्यों इजी होता था, कि मतलब जम क्यों आती थी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया जा रहा है. शीलिंग एकदम से डिक्रीज हो जाती थी और डिस्टेंस कम हो जाता था. ठीक है, दैट्स व्हाई you would get these jumps सर ये in. सिर्फ नॉन सर ये सिर्फ नॉन मेटल्स में हो सकते हैं ना सक्सेसिव आयनाइजेशन. किसी में भी, किसी भी एटम को पकड़ के उसमें से इलेक्ट्रॉन से मूव करना शुरू कर दो, तो आप किसी भी एटम में हो सकती है. मेटल्स में भी हो सकती है. क्लियर है बात? यस सर. तो बस इससे पता क्या लगता था? इससे पता ये लगता था कि इफ वो जंप आपने फिगर आउट करनी होती थी. दिस मीन्स के इट्स गॉट 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ना. तो वो जो क्वेश्चंस थे ना इसके, किधर के, आयनाइजेशन एनर्जी वाले, ये थे ना. हाँ, तो ये अब देखो ना कि वो कह रहा है कि ग्रुप 4 में कौन सा है. तो ग्रुप 4 में फर्स्ट 4 इजी होगा. So I think it's going to be C, ना, कि first, second, third, fourth electron remove करना, that's easy. Fifth is all of a sudden very, very difficult. समझ आई बात? तो यस सर. C जो होगा ना, वो ग्रुप 4 में होगा. A जो है ना, वो probably ग्रुप 1 में, कि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ना, that's very easy, and all of a sudden it becomes difficult ना. तो I think ये जो है ना, this is group 1, क्योंकि outer shell में there's 1 electron. ये वाला जो होगा ना, this is I think ये किस ग्रुप में है? ये मेरे ख्याल से ग्रुप 2 में है. फर्स्ट, सेकंड, फिर there's a jump, then all of a sudden there's a major increase ना. So the first 2 electrons are on the outside, तो valence electrons इसके 2 है, so this must be group 2. ये वाला किसमें होगा? This is 1 2 3 4 5. First 5 easy है, sixth is very difficult, तो इसका मतलब it's in group 5. First 5 electrons are in the valence shell. Clear है बात? तो आसान और कोई क्वेश्चन नहीं है? नो. बस ठीक है. चलो ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टाइम. Okay, sir. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज.